I have a brief opening statement, and then, if you wish, we will take a few questions. Every pre-budget commentator and writer, and every student of economics must be astonished by what he or she heard in the Finance Minister's speech to Parliament today. I accept that a budget is more than a statement of annual revenues and expenditure. In current circumstances, the budget speech must lay out a narrative that addresses the major challenges outlined in the economic survey released a few days ago. I'm not sure if the government and or the finance minister had read the economic survey 25-26. If they had, it appears that they have decided to discard it completely and fall back on their favorite pastime of throwing words, usually acronyms, at the people. I can count at least 10 challenges identified by the economic survey and many acknowledged knowledgeable experts. 1. The penal tariffs imposed by the United States have created stress for manufacturers, especially exporters. 2. Protracted trade conflicts that will weigh on investment. 3. The growing trade deficit, especially with China. 4. The low gross fixed capital formation, approximately 30%, and the reluctance of the private sector to invest it. 5. The uncertain outlook for flow of FDI into India and the persistent outflow of FPI for the last several months. 6. The agonizingly slow pace of fiscal consolidation and the continued high fiscal deficit and revenue deficit contrary to the FRBM. 7. The persistent gap between officially announced inflation numbers and the ground reality in terms of bills for household expenditure, education, healthcare, and transport. 8. The closure of lakhs of MSMEs and the struggle to survive of the remaining MSMEs. 9. The precarious employment situation, especially youth unemployment. 10. Growing urbanization and the deteriorating infrastructure in urban areas, municipalities and corporations. Now there are many more. For example, the depreciation of the rupee. None of this was addressed by the finance minister today. None. Not one of the challenges were addressed by the finance minister. It was therefore not surprising that the applause was perfunctory and most of the audience tuned out in quick time. In fact, I noticed that the telecast by Sansad TV switched off a few times. Even by an accountant's standards, it was a poor account of the management of the finances in 2025-26. Revenue receipts were shot by
rupees 78,086 crore. Total expenditure was shot by rupees 1,503 crore. Revenue expenditure was shot by rupees 75,168 crore, and capital expenditure was cut by 1,44,376 crore. This is between the center and the states. Not a word to explain this miserable performance in revenue and expenditure. Actually, the center's capital expenditure has fallen from 3.2% of GDP in 24-25 to 3.1% in 25-26. Capital expenditure has actually fallen in the year that concluded. In revenue expenditure, the cuts have fallen in heads that concern the common people. I'm giving you some examples. Rural development, 53,067 crore is a cut. Urban development, rupees 39,573 crore. Social welfare, rupees 9,999 crore. Agriculture, rupees 6,985 crore. Education, rupees 6,701 crore. Health, rupees 3,686 crore. Funds have been cut in crucial sectors and programs. Expenditure on the much vaunted Jal Jeevan mission, you can't believe this number, was cruelly cut from 67,000 crore to a mere 17,000 crore. 50,000 crore has been cut in one program. In 26-27, it has been boosted in the budget to 67,670 crore, but what credibility does the number have? From 67,000, you cut it to 17,000, and you boosted it back to 67,000 crore. These numbers have no credibility at all. After the months-long exercise, the RE of fiscal deficit has adhered to the B at 4.4%. And the projection for 26-27 is that fiscal deficit will fall by a meager 0.1%, from 4.4 to 4.3. The revenue deficit will remain stationary at 1.5%. It's certainly not a bold exercise in fiscal prudence and fiscal consolidation. The most serious criticism of the budget speech is that the finance minister is not tired of adding a number of schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs, etc. These are not my words. These are words in her speech. She has peppered her speech with schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs. I counted at least 24. I leave it to your imagination how many of these will be forgotten and vanish by next year. Lastly, on part B of the speech, months after passing of the Income Tax Act 2026, that will come into force on April 1, 2026, the finance ministers tinkered with some rates, while the impact of the numerous
minor changes has to be examined carefully. It must be remembered that the overwhelming majority of the people have no concern with income tax or income tax rates. As far as indirect taxes are concerned, the average person will be concerned with only paras 159, 160 and 161, where minor concessions have been given in personal baggage imported from abroad, and I welcome these minor concessions. Our verdict is that the budget speech and the budget failed the test of economic strategy or economic statesmanship. This is neither economic strategy nor economic statesmanship. चिदम्बरम जी, चिदम्बरम जी का बयान अंग्रेजी और हिंदी में दोनों आपको आपके व्हाट्सएप और ईमेल में मिल गया होगा। तो अगर अभी आपके कुछ सवाल हैं तो आप हम पूछ सकते हैं, आपको मिल गया होगा, 1-2 मिनट में मिल जाएगा। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी और चिदम्बरम जी। मैं चिदम्बरम जी के इस बयान को संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये ना जीडीपी ग्रोथ, ना इन्वेस्टमेंट और ना रोजगार के लिए कुछ खास करता है। काश निर्मला सीतारमण जी ने अपना ही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता जो 2 दिन पहले रिलीज किया गया था। उसमें देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, विस्तार से उसका उल्लेख वहां उन्हें मिलता। इनमें से 10 मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। पहला है जो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 50% टैरिफ जो हमारे देश पे लगा हुआ है, जिसका भारी असर हमारी एक्सपोर्ट्स पे पड़ रहा है। दूसरा, जो ट्रेड वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के कारण अब हर पूरे विश्व में फैल रहा है, उसका भारी असर हम पे पड़ रहा है। तीसरा, चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ता गया है और इस साल 116 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। तो पूरी तरह इंपोर्ट्स चीन से भारत आ रही हैं। चौथा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है जो 30% पे कई सालों से अटका हुआ है और जो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आपको पता है कि काफी बहुत सारे सालों से हर बजट में कोई ना कोई घोषणा हुई है, पीएलआई, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार 12% जीडीपी के रहा है। तो उनकी नीतियों का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो हमें देखना है कि इस बार जो घोषणाएं हुई थी उनका क्या इंपैक्ट होता है। सिर्फ घोषणा पे चलने का से कुछ नहीं बदलेगा। इससे जुड़ा हुआ है एफडीआई और गिरता हुआ रुपया। लगातार रुपया गिरता हुआ दिख रहा है। एशिया का सबसे कमजोर करेंसी माना जाता है और इसका मुख्य कारण है कि पैसा बाहर जा रहा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक जमाना होता था कि पैसा भारत में आता है, लेकिन नेट एफडीआई अब बढ़ चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और इसका कारण है, पहले जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स थे, वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आपको मालूम है कि हर साल 4,000 से 5,000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, डॉलर मिलियनेयर्स दुबई, सिंगापुर, लंदन में अपना रेजिडेंसी लेते हैं। अब उनके साथ उनका पैसा भी जाने लग गया है। जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस साल 24 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रुपया लगातार गिरता हुआ दिखता है। जो बजट अभी जो प्रेजेंट किया गया उसका फिस्कल डेफिसिट 4.4% है और ये जो 3% का टारगेट था उससे बहुत दूर है अभी भी। 7वां कारण है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट, जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट जो डिफ्लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है 0.6% बताया जा रहा है और इसी के बल पे हमें बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट 7.4% है। अब आप मुझे बताइए इस देश में कौन सा घर है, कौन सा व्यक्ति है जिसका इन्फ्लेशन रेट 0%, 6% है, जिसको शिक्षा पे खर्चा करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।